तो हेलो, वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अनऑफिशियल टेक। आज हम देखेंगे बीपीएससी 101 पेपर का, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सॉल्व्ड गेस्ट पेपर फॉर जून 2025 एग्जाम। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 1, जो कंसिस्ट होता है 20 मार्क्स का 12 क्वेश्चन को लेकर। और पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिक्स इन एक्सप्लेन। एक बात, जो ये मेरा आंसर शीट है ये, और टू द पॉइंट है, कॉन्साइज्ड है और अकॉर्डिंग टू व्हाट लिमिट है। ये नहीं कि बहुत सारे लिख दिया गया है, ठीक है। ये लिखने से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे, और एग्जाम में तो एक्स्ट्रा पेज नहीं प्रोवाइड किया जा सकता ना, आपको तो पता ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट लिमिट लिखना अच्छा बात है, और यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा बकबक मत करके शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है? पॉलिटिक्स इज द एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, फॉलो एंड चेंज द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी है जिनसे लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज को मेक करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको चेंज भी करते हैं, ठीक है। ये इट डील्स विथ हाउ पावर इज यूज्ड एंड हाउ डिसीजंस आर मेड इन अ कंट्री। Politics decides who will lead and what laws will be made and how public money will be spent. Politics is seen everywhere, in schools, offices, local bodies, states and national government. ये क्या करता है? ये लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करता है, डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए काम करता है। पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम अभी वर्ल्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ है। इनमें से डेमोक्रेसी, जो इंडिया में है, यूएसए में है, इसमें क्या होता है, जो पावर होता है वो लोगों के हाथ में रहता है, और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता ही होगा कि राइट टू स्पीक, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये डेमोक्रेसी में होता है। अब आता है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है कि दो तरह के मोनार्की होता है। एक है एब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि जो पावर है वो सारे मोनार्क होल्ड करता है, ठीक है। वही उस मतलब रीजियन का बॉस है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो सॉरी यूके में है, क्या है कि आपको लिमिटेड पावर दिया गया है मोनार्क, और पावर है लोगों के बीच में है, बट एक मेजर पोर्शन राजा के पास है, ठीक है। डिक्टेटरशिप, ये क्या है? पावर जो एक सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप के अंदर सीमाबद्ध रहता है, ठीक है। सिटीजन्स हैव लिटिल पावर और नो नो पावर, सिंपली। एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया को, किम जोंग उन, वही सब कुछ है, ठीक है। अगर उनको सही लगे तो सही, उनको गलत लगे तो गलत। उनको किसी को पनिश करना है, किसी का गला काटना है तो काट देंगे, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल सकते आप। दूसरा बात, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है? तो जो सारे कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास रहता है, ठीक है, प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज का। ये इसका एमिंग क्या बोलता है? इक्वलिटी, मगर होता नहीं, आपको पता ही होगा। इंडिविजुअल फ्रीडम इज लिमिटेड, एग्जाम्पल चाइना, ओके। अब पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप्स विथ कॉमन आइडियाज अबाउट रनिंग द कंट्री। इसका रोल बहुत कुछ है, लाइक contesting election, forming governments, making policies, representation of public needs. Each party has its own manifesto. Okay. In India, मेजर पार्टीज क्या है? टीएमसी, बीजेपी, आईएनसी, ठीक है, नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, ऐसा ही है। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है? पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। इट हेल्प्स इन forming government, leadership, create laws to maintain order and justice, allow citizens to
choose their representatives, protect rights, public सर्विस लाइक एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट गोल सेट करना, उसको उसके हिसाब से डेवलपमेंट करना, ठीक है। प्रोमोट यूटिलिटी एंड सोशल हार्मोनी इन डाइवर्स सोसाइटी, ऐसा इतना लिखने की जरूरत आपको है तो 4-5 लिख दीजिएगा तो होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में, ओनली इस क्वेश्चन में वर्ड है जो 40 to 50 वर्ड एक्स्ट्रा है, तो आप ये 3-4 आपके पसंद के हिसाब से 3-4 लिख सकते हो, बाकी को स्किप कर सकते हो, ओके। विदाउट पॉलिटिक्स there would be no proper system to run a country. Active public participation in politics keeps politics healthy and fair. यानी कि लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना पॉलिटिक्स में एक हेल्दी सेट करता है। और हर सिक्के का दो साइड होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड। हाँ, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी दो साइड है, एक गुड और एक बैड। गुड पॉलिटिक्स लीड्स टू प्रोग्रेस, यूनिटी एंड जस्टिस। ऑनेस्ट लीडर्स work for public welfare and listen to people's problems. Bad politics create corruption, unfair decisions, and poor leadership. It harms trust and development. People should vote wisely, stay informed, and engage in peaceful dialogue to support positive politics. यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। लोगों को वाइजली वोट करना पड़ेगा कि उनका लीडर कौन होगा और उनका आइडियोलॉजी क्या होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। आज के दिनों में क्या आता है तो सबको मालूम है, मगर आपको एग्जाम में ये सब लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पास करने के लिए या अच्छे मार्क्स लाने के लिए यही लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कंक्लूजन। पॉलिटिक्स इज द की टूल थ्रू which societies organize themselves, solve problems and shape their future. It involves leadership, decision making and public participation. Good politics ensure development, justice, and equal opportunities for all. By understanding politics, people become informed citizens who can vote wisely, express their opinions, and contribute to building a strong and fair nation. Whether in a democracy or other systems, political parties play a vital role in maintaining order and promoting the welfare of the society. Okay, second question. Examine Ralph Miliband's views on state. अभी ये क्या बोलता है, आप सुनो क्या बोलता है कि ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर, ये कौन था, ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर था, ठीक है। ये मेनली इसका क्रिटिकल व्यू है कैपिटलिज्म को लेके और स्टेट के लोग इसके लिए फेमस है। इसका फेमस बुक बुक का नाम जरूर याद रखना और आंसर में लिख देना। ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके आंसर को हायर लेवल तक ले जाता है, ठीक है। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969 में, ठीक है। तो ये बुक क्या बोलता है, हाउ मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट फंक्शन। मिलीबैंड आर्गूड दैट द स्टेट इज नॉट न्यूट्रल, स्टेट जो है वो न्यूट्रल नहीं है, इंस्टेड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ रिच एंड पावरफुल। जो रिच एंड पावरफुल लोग हैं उनका इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। स्टेट एज ए टूल्स ऑफ कैपिटलिज्म, उसका व्यू क्या है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो मेनली बिजनेस और रूलिंग क्लास है उसको ही प्रमोट करते हैं। He disagreed that the idea that the state works for all citizens equally, इसके ये जो all citizens equally है, ये इस थ्योरी के वो एंटी है, ठीक है। In his view, government policies, laws and decisions usually benefit corruptions, the wealthy and powerful elites. उसके हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉ और डिसीजन जो है वो सारे बेनिफिट किसको होता है, पावरफुल इलाइट्स को होता है। He said that even though people vote in election, the real power remains with those who control the wealth and major system. ये एकदम सही बात बोला है कि आम पब्लिक तो वोट देता है, ठीक है। जो मेन पावर है और या वेल्थ
मैनेजर जो लोग है उसके हाथों में ही कंट्रोल रहता है, ठीक है। अभी बोलता है रोल of a state personnel. Miliband studied that the background of working in key state institution, politicians, judges and top civil servant, military officer जो है, वो जो हायर लेवल पे जॉब करता है और सर्विस करता है, उन वो सारे मोस्ट ऑफ देम हैव बीन केम फ्रॉम अपर क्लास एंड इलाइट फैमिलीज। मतलब सच्छल परिवार से वो आता है और अपर क्लास से होता है, ठीक है। बिकॉज दे आर, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, they naturally support their benefit business interests. So even if leaders change through the elections, their thinking stays the same, making the state biased towards capitalism. अगर इलेक्शन में रिजल्ट कुछ भी आए, फिर भी जो कैपिटलिज्म है उसके हिसाब से ही चलता है स्टेट, ठीक है। रिजेक्टिंग द प्लuralist व्यू, सम स्कॉलर्स बिलीव इन प्लuralism, कुछ स्कॉलर प्लuralism में बिलीव करता है। वो क्या है? द आइडिया दैट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। बट मिलीबेंड क्या करता है? वो स्ट्रांगली डिसएग्री करता है इससे। वो आर्गू करता है कि रियल डिसीजन मेकिंग पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल रूलिंग क्लास। मतलब जो रियल पावर है वो रूलिंग क्लास की साथ ही है, ठीक है। He said that the influence on ordinary people is limited and most groups have little control or no control over major policies and law making। मतलब जो लॉ मेकिंग है और मेजर पॉलिसीज है उनमें छोटे लोगों का हाथ नहीं रहता है, वो कैपिटलिस्ट लोगों का ही हाथ रहता है, ठीक है। चेंज चेंज थ्रू स्ट्रगल, Miliband support political change, but he did not believe the election alone could solve the problem. He thought that the real change needed class struggle and active participation from the working people. Only then could a fair and equal society be built। वो स्ट्रगल को बताता है, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं। Ralph Miliband viewed the state as a tool used by rich and to maintain control in capitalist system। He challenged the belief that governments serve all citizens equally and emphasized the need for deeper social change। वो- ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द नॉर्मेटिव अप्रोच एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होता है? नॉर्मेटिव अप्रोच है जो एथिकल वैल्यूज और आइडियाज आइडियाज के साथ चलता है, ठीक है। वो नॉर्मेटिव अप्रोच होता है। इट फोकसेस ऑन व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए था, अभी क्या है और क्या होना चाहिए था, इसके जो डिफरेंशिएट वो नॉर्मेटिव अप्रोच करता है, ठीक है। ये मेनली क्या एक्सप्लोर करता है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। वो एक क्वेश्चन फ्रॉम करता है कि व्हाट इज जस्टिस, व्हाट शुड बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या आइडियल होना चाहिए था, हाउ शुड बी इंडिविजुअल्स गेट प्रोटेक्टेड। सो normative political theory is perspective and meaning it proposes how society should be organized based on the principle of liberty, equality and fairness। It uses reasoning, logic and moral judgment rather than factual data। इसका की फीचर्स क्या है? वैल्यू बेस्ड एंड फिलोसॉफिकल। दो तीन मतलब फिलोसोफर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, लाइक रोसो, प्लेटो, मार्क्स, गांधी, ओके। उसके बाद आता है एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच क्या है? व्हाट इज और प्रेजेंट सिचुएशन, observing and analyzing how politics
functions in practice, मतलब वो वास्तववादी है, ठीक है। It emerged prominently during behavioral revolution in the mid 20th century, ठीक है। वो नॉर्मेटिव अप्रोच की तरह जो मतलब व्हाट शुड हैपन ये ना देख के ये व्हाट एक्चुअली हैपेंस ये सेट करता है, ठीक है। इसका की फीचर्स क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, रिलाइज ऑन observable facts and real world evidence, avoids moral judgments, ये moral judgment को नहीं देखता है, क्या हो रहा है वो देखता है, ठीक है। influenced by scholars like David Aston, Gary Ammond, Gabriel Ammond, sorry, Robert Dahl, etc. ओके। अब इनमें से दो लोगों का आप नाम लिख सकते हो और फीचर्स देख लेते हैं इसका डिफरेंस का। कोर फोकस, इसका फोकस क्या है? व्हाट ऑट टू बी, और एम्पिरिकल अप्रोच का व्हाट इज इट, व्हाट इज इट गोइंग नाउ। इसका मेथड क्या है? फिलोसॉफिकल रीजनिंग और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ये है वैल्यू बेस्ड एंड ये इट इज डाटा बेस्ड, ओके। इसका एग्जांपल क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के हिसाब से। और इसका एग्जांपल वोटिंग पैटर्न्स एंड पार्टी बिहेवियर। इसका की थिंकर्स का नाम है प्लेटो, गांधी, मार्क्स। इसका एस्टन, आमंड, डल, ओके। So both approaches are vital to political theory. The normative approach offered visions. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही मेन लाइन है। The normative approach offers vision, values, and guiding societies toward ethical goals. Whereas empirical method वो अंडरस्टैंड करता है क्योंकि रियल थिंग्स है, ठीक है, रियलिटीज है। सो आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल आपको लिखने के लिए बोला है, ठीक है। ये देख लेते हैं। द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी refers to the renewed interest in studying political ideas, values and principles after a period of decline. During 1950 to 1960, the behavioral approach shift to focused on data, statistics and scientific methods. Political theory, which deals with the abstract concepts like justice, liberty, and equality, has been outdated. However, 1970 to 1970s, scholars realized that political theory is essential to understand deeper questions about society, power, and governance. This led to its revival. मतलब 1950 से 1960 तक ये सिर्फ डाटा, स्टैटिस्टिक्स और साइंटिफिक मेथड के बारे में सोचता था, और 1970 टू 80 में आके ये मतलब देखता है कि पॉलिटिकल थ्योरी एसेंशियल है on society, power, and governance. Decline during behaviorism. Okay. So, the behavioral revolution and emphasized research-based observation, surveys, and measure facts. So, behavioral resolution क्या करता है? Revolution क्या करता है? Emphasize करता है research-based observation and surveys and measurement facts. It discourages the discussion of values, philosophy. As a result, the study of political theory weakened. So scholars focused more on how politics works instead of how it should work. Okay. Reason for revival: failure of behavioralism. It could not address the ethical and moral question. Rise of ideologies, movements like feminism, environmentalism, multiculturalism, and demanded for वैल्यू बेस्ड डिस्कशंस, वो क्या करता है? राइज करता है आइडियोलॉजीज को, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जस्टिस, इवेंट्स लाइक वॉर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी मेड पीपल क्वेश्चन systems to power. Need for guidance: citizens, scholars want to explore ideas of justice and human rights, democracy. contributes contribution of thinkers, जॉन रॉल्स क्या बोलता है उसका थियोरी ऑफ जस्टिस में?
एथिक्स और फेयरनेस बैक इनटू पॉलिटिक्स। उसके बाद आता है फेमिनिस्ट थिंकर एक लाइक सुसान मोलर किन challenged traditional theory and emphasized the gender equality. Conclusion देख लेते हैं. The revival of political theory helped reconnect politics and philosophy, ethics, and human dignity. It showed that political science is not only about facts but also about ideas and values. Political theory remains important to justice, rights, and democracy in changing world. Fifth question. Explain the difference between liberalism and neoliberalism. अभी लिबरलिज्म कब इन्वेंट होता है? 17 टू 18 सेंचुरी। सपोर्ट क्या करता है? इंडिविजुअल राइट, फ्रीडम और डेमोक्रेसी। ठीक है। और एम्फोसाइज किस होता है? गवर्नमेंट प्रोटेक्शन टू राइट्स एंड इक्वालिटी। बिलीव क्या कर इन बिलीव्स इन बैलेंस्ड रोल ऑफ स्टेट। इसका मेन मोटो है जस्टिस, पब्लिक वेलफेयर, सोशल सेफ्टी एक्सेट्रा। ठीक है। ये सपोर्ट करता है फ्री स्पीच, वोटिंग राइट्स, एजुकेशन, फेयर अपॉर्चुनिटीज। इसका एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। वेलफेयर प्रोग्राम्स, सिविल राइट्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आर रूटेड इन लिबरल वैल्यूज। अभी नॉन न्यू लिबरलिज्म अर्थात नया जो स्वाधीनता स्कीम है वो क्या है? लेट 20 सेंचुरी में आया है, स्पेशली 1980 में। फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फ्रीडम एंड फ्री मार्केट, प्रमोट्स प्राइवेटाइजेशन, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है। ये इनकरेज करता है ग्लोबल ट्रेड को, लो टैक्सेस एंड प्राइवेट सेक्टर लीडरशिप। इसके एग्जांपल प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सर्विस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, रिड्यूसिंग सब्सिडाइज एंड इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसके कंक्लूजन देख लेते हैं। ये देख लेंगे एक बार। मेजर डिफरेंस क्या है इसका? एनलाइटमेंट कब हुआ था? इसका एनलाइटमेंट 20th सेंचुरी में हुआ था। इसका की फोकस क्या है? रोल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इकोनॉमिक अप्रोच है, रेगुलेटेड कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। ठीक है। सोशल वेलफेयर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। कंक्लूजन में देख लेते हैं कि ये जो पहला लिबरलिज्म था वो फोकस करता है फेयरनेस और राइट्स को लेके, और न्यू लिबरलिज्म जो है वो मार्केट ड्रिवन है। ठीक है। रियलिटी बेस्ड है कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करना होगा। सिक्स क्वेश्चन। एग्जामिन द एडमंड ब्रूक एज ए कंजर्वेटिव थिंकर। सो एडमंड ब्रूक क्या था? वो कौन था? ब्रिटिश फिलोसोफर था। ठीक है। इस एक इन्होंने एक बुक लिखा था, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। इस इनके लिए इसको जाना जाता है। तो where he criticized the radical political changes and defended traditional institutions। या क्या करता है? मतलब क्रिटिसाइज करता है रेडिकल जो पॉलिटिकल चेंजेस है समय के साथ, उसको क्रिटिसाइज करके जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसको डिफेंड करता है। ठीक है। सो बुक बिलीव दैट द costumes customs, traditions, and long-standing institutions are valuable. He argued that society should not change suddenly but gradually। मतलब चेंज होना नहीं है, एकदम से नहीं, ग्रेजुअली चेंज होना है। रेस्पेक्टिंग द विजडम ऑफ पास्ट, मतलब जो पिछले जो बीत गया उसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा थोड़ा करके चेंज होगा। ठीक है। अभी देख लेते हैं कि कैपिटलिज्म of radical change. Brooke opposed violent revolution like French Revolution. He believed that sudden changes destroy order and create chaos. Instead, he supported slow and careful reforms. Importance of real religion and morality. Brooke saw religion and moral values as essential for society stability. He believed that they guide human behavior and support authority and justice. Organic view of society. Brooke viewed society as a living organism and built over generation. He said that the people should act
not just for themselves but for past and future generation. इसका opposition to revolutionary ideas. तो ये क्या करता है, ये बड़ा बड़ी कंजर्वेटिव है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में ही मालूम पड़ गया कि ये कंजर्वेटिव थ्योरी है, तो ये रिवॉल्यूशन को अपोज करेगा, ठीक है। These ideas promoted balance, continuity, and respect for history, influence, and legacy. Brooks' ideas shaped conservative ideology as across Europe and America. He is seen as the father of post father of modern conservatism. Okay. His work continues to be studied in political science and philosophy for understanding conservatism. अभी conclusion देख लेते हैं कि Edmund Burke conservative theory promoted tradition, gradual change, and moral values and social love. Write a note on अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट ए नोट ऑन फास्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, अर्थात फेमिनिज्म का फास्ट वेव क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक जो फेमिनिज्म का वेव था वो फास्ट वेव कहलाता है। ये मेनली फोकस करते हैं लीगल राइट, पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड स्पेशली राइट टू वोट को, ठीक है। उस टाइम को इस राइट टू वोट मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया। This wave was the earliest organized movement demanding gender justice in Western societies. आगे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, उसके बाद की डिमांड फॉर गोल्स, इसका डिमांड क्या है, राइट टू वोट, लीगल इक्वालिटी, access to education and professions, reform of marriage and property laws. अभी ग्लोबल डेवलपमेंट क्या है, इन ब्रिटेन ग्रुप्स लाइक suffragettes are led by देख लेना एक बार फोटोज, ठीक है। ये सारे देख लेना, उसको होते हैं अचीवमेंट, इम्पैक्ट, कंक्लूजन। नंबर 8 मिचेल फोकल्स व्यूज ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। वो तो उसका जो पोस्ट मॉडर्न थॉट है एक बार देख लेना, उसका क्रिटिक ऑफ ये क्या है, मेनली यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, लाइक जो हिस्ट्री में दिया गया है उसको ये अपोज करता था कि अगर ये मतलब जो कन्वेंशनल प्रोसेस है उसको हमेशा सही नहीं मानता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, ठीक है। तो देख लेना। इसके बाद आता है डिस्कोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन। Focused on discourses, ways of speaking and thinking, shapes people's identities and action. For example, in his work on medicine and mental health, he examined how definitions of normal and abnormal are created by experts and used by institutions to regulate behavior. Such ideas reflect postmodernism interest in language, power, and construction of reality. उसके बाद फिक्स स्ट्रक्चर का रिजेक्शन। कंक्लूजन देख लेते हैं कि उसका व्यू सपोर्ट पोस्ट मॉडर्न आइडियाज बाय चैलेंजिंग यूनिवर्सल ट्रूथ, लिंकिंग पावर विथ नॉलेज एंड एनालाइजिंग हाउ इंस्टीट्यूशन शेप सोसाइटी।
He encouraged people to question dominant narratives and explore how language and ideas influence our understanding of truth and freedom. अगला क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस होता है जो इंडिविजुअल्स को ग्रांट क्या करता है, कौन, कंट्री और एक बॉडी में, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि टू एंजॉय सेंट्रल राइट्स और परफॉर्म फंडामेंटल ड्यूटीज। इट डिफाइंस पर्सन्स रिलेशनशिप विद द स्टेट एंड गिव्स, स्टेट मीन्स नॉट लाइक कर्नाटका, वेस्ट बंगाल ऐसा, बट द स्टेट मीन्स कंट्री और रीजन, gives them identity as a member of the nation. Citizenship includes legal recognition and active participation in the society. अभी राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप क्या है? Citizens enjoy important rights guaranteed by the constitution such as right to vote, right to freedom of speech, right to education and employment, right to equality and justice, right to protection by law. अब इसका ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जा सकते हैं तो आपको ड्यूटी कुछ निभाना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो तो एक और एकाधिक लोगों को देता है, मगर वो क्या सोचता है, उसका क्या ड्यूटी है, ये सेट करता है कि सोसाइटी कैसे चलेगा, ठीक है। तो ओबेइंग लॉज, पेइंग टैक्सेस, रिस्पेक्टिंग national symbols and institutions, participating in civics activities, protecting environment, promoting harmony and unity. Responsible citizens help to create a peaceful and law-abiding and inclusive society. Types of citizenship क्या है? Natural citizens by birth in a country, acquired citizenship by applying and meeting legal requirements like naturalization, naturalization, अच्छा। उसके बाद dual citizenship, like a person holds citizenship of two countries not alone in India. Global citizenship refers to a sense of belonging to the global community, promoting shared human values. In citizenship in India, मतलब इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसके हिसाब से सिटीजनशिप एक्ट किसमें आता है? आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप बेस्ड ऑन बर्थ, डिसेंट, registration and naturalization. Foreign nationals may apply for Indian citizenship through legal procedures. Indian does not India does not allow dual citizenship. Any Indian acquiring foreign citizenship must give up Indian status. Conclusion क्या होता है? Citizenship gives people identity, protection, and a voice in the political system. It is the foundation of democracy and social unity. Good citizens strengthen their nation by respecting laws and participating actively in public affairs. Understanding citizenship helps individuals to realize their rights and responsibilities to building a better society. उसके बाद नंबर 10, रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप। अभी डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप दोनों क्वेश्चन हम अकेला मतलब सेपरेटली देखा था, अभी इसको एक साथ करके इसका रोल क्या होता है वो पूछा है। तो डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप आर क्लोजली कनेक्टेड कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। Democracy means rule by the people. Citizenship means मतलब who those people are and what roles they play in society. In democratic system, citizens are found on the foundation of governance. They choose leader, express their opinions, shape policies. Active participation. Democracy depends on the active involvement of citizens. People have right to vote, speak freely, and take part in the political decisions. Citizens are not just observers, they are participants. Citizenship gives people the legal status to enjoy these rights and perform duties, making democracy truly functional. Without responsible citizens, democracy cannot be succeeded. Voter participation and public debates and peaceful protest reflect democratic values.
Rights and duties. Rights. Rights are legal and moral entitlements given to every citizen. They ensure freedom, equality, and protection under the law. Indian Constitution provides fundamental rights like right to equity, right to equality, right to freedom, right to education, right against exploitation, right to constitutional remedies. Rights help individuals live and dignity and participate in national development. They protect citizens from injustice and government misuse of power. Duties. Duties are responsible that every citizen must follow. They maintain peace, order, and harmony in the society. So, fundamental duties, Article 15A, 51A of the Indian Constitution में दिया गया है, ठीक है? Example like obeying laws and respecting the Constitution, promoting unity and brotherhood, defending the country, protecting public property and environment. So duties support national progress and safeguard everyone's rights. The balance between rights and responsibilities strengthens democracy, equality and representation. Citizenship in a democracy promotes equal treatment and representation. All citizens, regardless of their background, have a voice in elections and lawmaking. This helps build fair society and protect minority interests. Democracy encourages inclusive citizenship where individual matters. Education and awareness. For democracy to thrive, citizens must have educated and politically aware. Informed citizens can question injustice, demand accountability, and support good governance. Citizenship helps people understand how the system works and how to change it wisely. Education is the tool that empowers citizenship in democratic system. Conclusion में क्या बोलता है? In democracy, citizenship uh, is both a status and responsibility. It gives people the power to shape their government and protect their rights. At the same time, it demands active participation and ethical behavior. A strong relationship between democracy and citizenship ensures justice, equality, and freedom to all. Number 11. Write a note on factors impacting political participation. Political participation refers to the ways in which citizens take part in political activities, such as voting, attending rallies, joining parties, expressing views. Several factors are discussed below. Education level. Educated individuals are most aware of political issues. They understand the rights, are more likely to vote and engage in debates. Higher education promotes informed decision making. Socioeconomic status. Whether people often participate more due to access to resources. Economic stability enables greater political involvement. Those from low income groups may face barriers like time constraints or lack of access to information. Age and gender. Young people may less interested and inexperienced in politics. Older citizens have often show higher voting turnout. Gender also influences participation, especially in places where cultural restriction on women roles. Political awareness. Awareness through media, education, and discussion motivates action. People who follow the news and understand the politics are more active politically. Trust in government. Citizens who believe in government accountability participate more. Corruption and lack of transparency reduces interest and trust. Sixth point, social and cultural norms.
Community tradition and cultural expectation affect participation, especially in rural and conservative areas. 7 point political opportunities and accessibility. Easy access to voting centers, public meetings, and digital platform improves participation. Complex procedure or limited outreach discourage engagement. Party affiliation and mobilization. Strong ties with political parties or leaders increase involvement. Campaigns and party activities create opportunities for the participation. Conclusion देखो लेते हैं. Political participation depends on a mix of personal, social, and institutional factors. Education, income, awareness, and trust play a major role. A healthy democracy requires active, informed, and responsible citizens. Removing barriers and promoting inclusion helps increase participation and strengthen the democratic values. Last question. Discuss representation in democracy. Representation in democracy. Representation is a fundamental feature of democratic governance. In democracy, people rule either directly or indirectly. Since it is impractical for all citizens to participate in every decision, representation enables elected officials to speak and act on behalf of the people. It ensures public views, interests, and needs are reflected in laws and policies and programs. Importance of representation. Representation makes democracy inclusive and functional. Citizens vote to elect representatives who make decisions in legislature, propose laws, and oversee administration. It creates accountability, transparency, and legitimacy. Representation allows every group, especially marginalized communities, to be part of the political process. Without representation, democracy becomes limited and irresponsive. It bridges the gap between governed and those in power. Types of representation क्या है? Direct representation. Citizens directly participate in decision making mainly through referendums or local initiatives suitable for smaller communities. Indirect indirect representation. Citizens elect leaders to represent them in bodies like parliament and assemblies. Most Democrats follow this system. Most Democrats follow this system. Descriptive representation. Elected officials share social traits like gender, caste, ethnicity, and their constituents. It promotes inclusion and identity-based leadership. Substantive representation. Representatives work to advance the actual interest and need of the people, even if they not they do not share their background. Symbolic representation. मतलब leaders embody national pride and utility. Their position creates emotional bonds and with the state or institutions. A role in strengthening democracy. Representation supports key democratic principles such as equality, participation, accountability, and responsiveness. Conclusion में representation is the cornerstone in democracy. It allows citizens to take part in shaping laws and policies through elected leaders. It ensures fairness, accountability, and public involvement. Various forms of representation make democracy flexible, inclusive, and effective in responding to the needs of people. A well representative
Society is more just participative and united. तो आपके सारे क्वेश्चन हो गया, एक बार पूरा देख लीजिए पॉज करके, उस हिसाब से एग्जाम में आप कॉमन मिलेगा ही आपको, ठीक है। थैंक यू।